नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी। हम सबको पता है कि कैसे फ्रांस के अंदर एक टीचर को बिहेड कर दिया गया बाय अ बॉय, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके भगवान का मजाक उड़ाया जा रहा था बाय दिस टीचर, बिकॉज दिस टीचर मेड कैरिएचर्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। मगर ये है टॉलरेंस लेवल इस रिलीजन के अंदर, जहां पर ये सोच को बाकी देशों के लीडर्स, मुस्लिम इस्लामिक देशों के लीडर्स सपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ, आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूं अबाउट द थॉट प्रोसेस ऑफ अनदर हेड of another country. This person is none other than the Prime Minister of Malaysia. He is the two-time Prime Minister of Malaysia. Malaysia is an Islamic country. और मलेशिया में गई थी जब एक कोई अवार्ड फंक्शन था इन भोजपुरी सिनेमा, वेयर आई वॉज परफॉर्मिंग ऑन सम सॉन्ग। एंड ट्रस्ट मी, जब मैं मलेशिया जा रही थी तब मेरी फैमिली ने मुझे बोला था कि मैं कुछ भी ट्वीट नहीं करूंगी, कुछ भी पोस्ट नहीं करूंगी जो इस्लाम से रिलेटेड होगा। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि इस्लामिक कंट्री के अंदर अगर मेरे पोस्ट किसी ने पब्लिकली स्प्रेड करने का प्रयास किया, या जहां मैं रह रही हूं वहां पर कुछ करने का प्रयास किया, देन इट विल नॉट बी बेनिफिशियल टू मी एंड द पीपल हु हैव कॉल्ड मी टू मलेशिया। बिकॉज बहुत सारे लोग समझते हैं कि मैं एंटी मुस्लिम हूं, मगर मैं एंटी मुस्लिम बिल्कुल नहीं हूं। मैं सिर्फ इस्लाम के अंदर कुछ प्रथाएं हैं जिन्हें मैं रिग्रेसिव समझती हूं, उनके ऊपर बातचीत करती हूं, बिकॉज मैं एक भारतीय नागरिक हूं और भारत के अंदर सभी लोगों को इक्वल राइट्स है, चाहे वो कोई भी धर्म के क्यों ना हो। मगर बिकॉज भारत के अंदर गंदी पॉलिटिक्स की जाती है, इस पॉलिटिक्स के तहत लॉट ऑफ पीपल आर ब्रेन वॉशिंग द इनोसेंट मुस्लिम्स against the Kendriya Sarkar and against the things that the Kendriya Sarkar has done. Be careful here. I am not from the BJP political party, nor am I a blind अंधभक्त of Modi ji. But yes, BJP सरकार ने काफी अच्छी चीजें की है, जैसे आर्टिकल 370 को निकालना, CAA कानून लाना, that also democratically, not through some amendment like that. It was got as a bill which passed with majority in Rajya Sabha and Lok Sabha. So anyways, lot of Indian innocent Muslims are brainwashed. So इसलिए मैं ज़्यादातर जब ऐसी इस्लामिक कंट्रीज में विजिट कर रही होती हूँ तो मैं लो प्रोफाइल रखती हूँ. So let's talk about the thought process of this two-time Prime Minister of Malaysia. क्योंकि अब पता चला है कि नाइस में जो एक फ्रेंच सिटी है वहां पर एक नाइफ अटैक हुआ है, और नाइफ अटैक में 2 लोगों की जान गई है। और जिस आदमी ने ये नाइफ अटैक किया है उसने नाइफ अटैक करते हुए अल्लाहू अकबर कहा है। सो समथिंग इज रियली रॉन्ग एंड पीपल ऑफ दीज इस्लामिक कंट्रीज नीड टू रिकॉग्नाइज दिस रैडिकल थॉट प्रोसेस जो इनके धर्म के अंदर है, जिनकी वजह से इनोसेंट लोगों की जान जा रही है। So let's try to understand the thought process of Dr. Mahathir Mohamad. He is the two-time Prime Minister of Malaysia. उसका कहना है that the teacher in France had his throat slit by a 18-year-old Chechen boy, जो एक मुस्लिम बॉय होगा. The killer was angered by the teacher showing caricature of Prophet Muhammad. The teacher intended to demonstrate the freedom of expression. जी हाँ, freedom of expression सभी के पास होनी चाहिए, सभी कंट्रीज के अंदर। भारत के अंदर तो इतनी freedom of expression है कि आप भारत के गॉड्स का मजाक उड़ाते हो और वो पिक्चर को सुपर हिट बनाते हैं भारतीय हिंदू। जी हाँ, भारत के अंदर इतना फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि स्टैंड अप कॉमेडियंस अपनी रोजी रोटी कमाते हैं भारत के हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस का मजाक उड़ाकर। दैट इज द लेवल ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच इन भारत। मगर अगर हम इसको रिवर्स कर दे, देन ऑब्वियसली लॉट ऑफ पीपल से दैट माइनॉरिटी इज बीइंग टारगेटेड। ये एक ऑब्वियसली फेमिनिस्ट का एजेंडा है। मगर महातीर मोहम्मद को मैं इतना कहना चाहती हूँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच हैज टू बी देयर इन एवरी कंट्री, वेदर सेक्युलर कंट्री और इस्लामिक कंट्री और अ हिंदू कंट्री। मगर वो कह रहा है that killing is not an act that a Muslim, that as a Muslim I would approve, okay, but I believe in freedom of expression and I do not think it includes insulting other people. देखिए, कोई इंसल्ट नहीं कर रहा है, कोई भी भगवान का
कार्टून बनाना, उसको इंसल्ट करना हुआ, तो भारत के अंदर, तो भारत के गॉड्स एंड गॉडेसेस के ऊपर इतने कार्टून्स बनते हैं, इतने कैरिकेचर्स बनते हैं कि यहां पर तो रोज ब्लड शेड होने लगा अगर हिंदू ऐसे सोचने लगे। तो आपको अपने धर्म के अंदर टॉलरेंस लेवल लाना पड़ेगा, बिकॉज आपके धर्म के अंदर भी कुछ प्रथाएं हैं जो रिग्रेसिव हैं, विच नीड टू चेंज विद टाइम। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ महातीर मोहम्मद को, क्योंकि ये यहाँ पे बात कर रहा है अबाउट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन डज नॉट मीन इंसल्टिंग समबडी एल्सेस रिलीजन। मगर आप मुझे बताइए कि टर्की के प्रेसिडेंट ने आया सोफाया को फिर से एक मॉस्क क्यों बना दिया, जब वो इतने सालों से एक म्यूजियम था और उसके पहले एक रोमन कैथेड्रल चर्च था। तो ओटोमन एम्पायर में जो मॉस्क बना उसको फिर से क्यों बनाया मॉस्क, ये टर्की के प्रेसिडेंट ने। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब कि आप प्यार प्यार से लोगों के ऊपर अपना धर्म थोप दे जो आपकी कंट्री में माइनॉरिटी है, फिर आप लोग बैठ के दूसरे कंट्रीज को लेक्चर दे जिन कंट्रीज के अंदर आपकी कौम माइनॉरिटी है कि भैया उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, जब वो जाके मेजॉरिटी कौम का गला काट दे। व्हाट नॉनसेंस इज दिस महातीर मोहम्मद। अब मलेशिया के अंदर वो कह रहे हैं कि देयर आर पीपल ऑफ मेनी डिफरेंट रेसेस एंड रिलीजन एंड वी हैव अवॉइडेड सीरियस कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन रेसेस बिकॉज वी आर कॉन्शियस ऑफ द नीड टू बी सेंसिटिव टुवर्ड्स द सेंसिटिविटीज ऑफ अदर्स। ट्रस्ट मी, अगर ऐसा होता तो मुझे अपना ट्वीट और आइडेंटिटी लो प्रोफाइल नहीं रखना होता जब मैं मलेशिया में होती, एंड आई डिड दैट बिकॉज इट वॉज एन इस्लामिक कंट्री। आगे वो बात करते हैं कि he is targeting the west। वो कह रहे हैं अपनी स्पीच में कि we often copy the ways of the west, we dress like them, we adopt their political systems, but we have our own values different as between races and religions and we need to sustain them। देखिए, आपको आपकी values sustain करने से कोई नहीं रोक रहा है। The trouble with new ideas is that latecomers tend to add new interpretations. Freedom of women means the right to vote in elections. Today we want to eliminate everything that is different between men and women। वो clarification दे रहे हैं कि उनके हिसाब से gender equality क्या है उनके धर्म के अंदर, जिस countries को वो Islamic countries बना देते हैं। अगर आपको इतना ही freedom of expression and sensitivity towards other religion है तो अपनी country को secular बना दीजिए। आप अपनी कंट्री को इस्लामिक कंट्री क्यों बना देते हैं? एक बार अपनी कंट्री को इस्लामिक कंट्री बनाकर आप फिर बात करते हैं अबाउट सेंसिटिविटी टुवर्ड्स अदर पर्सन्स रिलीजन। आई थिंक दैट इज शियर हिपोक्रेसी। वो अभी विमेन और मेन के फिजिकलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं कि बोथ ऑफ देम आर फिजिकली वेरी डिफरेंट, दिस लिमिट्स हर कैपेसिटी टू बी इक्वल। वी हैव टू एक्सेप्ट दीज डिफरेंसेस एंड लिमिटेशंस that are placed on us। Our value system is also a part of our human rights। Nobody is snatching away your value system, but you talk about gender equality, then can you elaborate on something called as female genital mutilation, where the genital parts of a female are mutilated so that she does not feel orgasm? Can you talk on that, because that is a part of your religion, and that part of your religion is very very regressive, and that is not related with clothes and burqa and g-strings or whatever you want to say that the west women wear and adapt according to their thought process। because आप target कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं that the dress code of the European women at one time was severely restrictive। apart from their face no other body part was exposed, but over the years more and more body parts started getting exposed। today a little string covers the most secret part and that's it। in fact many in the west are totally naked when on certain beaches। that is their choice, that is their decision, you have to respect their choice। आप अपने थॉट प्रोसेस और अपने रिलीजन के थॉट प्रोसेस वेस्ट के ऊपर नहीं थोप सकते। आपको अपनी विमेन को बुर्खा में रखना है और आप एक तरफ बात करते हैं अबाउट जेंडर इक्वालिटी। आप बुरखे में रखने वाली औरत के साथ फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन क्यों करते हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ? व्हाई आर दे नॉट सपोज टू फील ऑर्गेज्म व्हेन दे हैव इंटरकोर्स विद देयर पार्टनर्स और हस्बैंड्स? तो देखिए, आप जो बोलते हैं ना उसमें बहुत ज्यादा हिपोक्रेसी है महातीर मोहम्मद। आई एम जस्ट कॉलिंग इट आउट बिकॉज आई डोंट थिंक आई वांट टू विजिट मलेशिया इन नियर फ्यूचर, सो आई कैन टॉक टू द टू टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया directly via this video।
the obviously he's criticizing the West further. He says that the West should not try to forcibly impose this on other. जी नहीं, आपकी औरतों को जी स्ट्रिंग नहीं पहनना मत पहनिए, आपकी औरतों को बुरखों में घूमना है तो घूमने दीजिए, मगर अगर पब्लिक प्लेसेस में वो बुरखे में जाएंगे and there is problem in recognizing if the person behind the burqa is a man or a woman, then there are going to be certain restrictions on the wear of burqa in public places, because lot of terrorist acts have been carried out by people who have hid themselves behind a burqa. So your outfit cannot lead to terror attacks all over the world. That should be clear. बाकी आपको घर के अंदर क्या करना है आपकी चॉइस है, आपको अपनी औरतों को घर से बाहर नहीं भेजना, मत भेजिए, घर में रखिए, वो कंप्लीटली उनकी चॉइस है। मगर आप जब हिपोक्रेसी की बात करते हैं, अबाउट द वेस्ट हैविंग हिपोक्रेसी एंड जेंडर जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं व्हेन इट कम्स टू योर रिलीजन, देन आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सपोज द हिपोक्रेसी ऑफ योर टॉक ऑन जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, फिर ही टॉक्स अबाउट the West no longer adhere to their own religion. They are Christians in name only. Excuse me, you have no right to blame the Christians whether they follow their religion or not. That is completely their agenda. We know what Christians do in India. They try to obviously convert the middle class strata of Indians into Christianity by offering them whatever they think works for them. Some of them are even connected with the GOI. Yes, I'm going to be making a video on that how Christians are working behind the scenes in converting India into a Christian nation. So Christians know how to spread their faith. So let's not get into the fact that the Christians don't know how to follow their faith. They are also into conversions, but yes, their conversions are not forceful conversions. They don't, photo bums and scream Allahu Akbar. They are not doing all these things. साथ में Macron, he is targeting the president of France. Mahathir Mohamad is saying Macron is not showing that he is very civilized. He is very primitive in blaming the religion of Islam and Muslims for the killing of the school teacher. Excuse me, why did the killing happen? The school teacher was not having an affair with the boy's mother or the boy's sister or the boy's wife. The school teacher was killed because he made a caricature on Prophet Muhammad. So that is obviously showing something wrong in the religion, that religion is okay or is sermonizing its followers to do something like this in the name of religion. Nobody should be allowed to kill somebody in the name of religion. That is not done. तो यहाँ पर you are not accepting the fact that the 18-year-old child or the 18-year-old boy actually committed a terrorist attack because he committed a killing in the name of a religion. Simple as that. But irrespective of the religion professed, angry people kill. That is what Mahathir Mohamad is saying. He is actually going back, justifying that if Muslims kill French, then it is okay. Yes, listen to this tweet. The French in the course of their history has killed millions of people and many were Muslims. जी हाँ, so ये thought process रखता है Mahathir Mohamad. He is justifying the killing of Muslims. He is saying that the Muslims can kill the French because the French have killed the Muslims in the past. Muslims have the right to be angry and to kill millions of French people for the massacres of the past. He is justifying the killings of French in France. This is the thought process of Mahathir Mohamad, the two-time Prime Minister of Malaysia, an Islamic country, and this is obviously their hidden agenda. They obviously pose a secular face. If you're so secular, make your country secular. If you are a fascist, then accept that you are a fascist. You want to keep your country an Islamic country and then you want to give us gyan about how to kind of promote freedom of expression. Excuse me, आप लोगों का चित भी आपकी पट भी आपकी नहीं हो सकती. So this is the thought process of Mahathir Mohamad. टर्की के प्रेसिडेंट अर्डोगन की थॉट प्रोसेस तो आपको पता चल गई है. पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के बारे में तो क्या बात करनी, वो तो एक नंबर का गधा है. रही बात Mahathir Mohamad, this is what he says. He justifies the killing of the French in the name of religion because he says in the past the French killed the Muslims. तो ये है thought process इन लोगों की, and that is what I wanted to expose to all of you, because बहुत सारे liberals और feminists कान बंद कर देंगे, बोलेंगे नहीं anything on the French beheading or on this knife attack in Nice that happened recently after the beheading in France.
तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि समथिंग इज रियली रॉन्ग इन दीज इस्लामिक कंट्रीज एंड द पीपल heads of these Islamic countries, instead of recognizing what is wrong in their religion, what is wrong in their religious book, जिस religious book को पढ़ के लोग actually forcefully दूसरे धर्म के लोगों को convert करना चाहते हैं, instead of recognizing that, they are obviously playing the victim card in those countries where they are not the majority. नमस्ते, जय हिंद.